I would like to invite Dr. Alkaji to honor today's chief guests, Sri Brahma Bhishma Ji, Royal Priest of Royal Family of Kingdom of Thailand. Ms. Alpana Dubey Ji, Deputy Chief of Mission for Embassy of India in Thailand. Now, I would invite Dr. Alkaji to proceed the event. Thank you. First of all, thank you so much. Namaste, Sawadika, good morning. Thank you for coming, and pranam to our chief guest. As we all know, you can sit on your mats. Okay. So today we have our chief guest, Deputy Chief of Mission from Embassy of India in Thailand, Ms. Alpana Dubeji. Bhishma Ran Se Brahman Kul, Royal Priest of Royal Family, Kingdom of Thailand. So I welcome on behalf of Agath Healthcare. Welcome. I would like to introduce Achan Bhishma Brahmaji. He is Royal Priest of Royal Household. He has completed his studies in India, Vivekanand Vidya Kala Ashram Gurukulam. He has done his till 12th and engineering and in marine engineering from AMET University. He has sailed as marine engineer for 13 months and became royal priest from then on. His spiritual learning is done with the blessing of Sri Jayendra Saraswati Shankaracharya Ji and Sri Vijendra Saraswati Shankaracharya Ji from his 7th grade till today. When he was in CIRS, he has studied spirituality, Vedanta, scriptures from Swami Swarupanand and Swami Anukulananda Ji. He has been participating, preaching in various programs, conferences, and many occasions for the well-thought and well-being of people for about 10 years, and he is continuing to do so. In many occasions, he has represented Hindus in Thailand with the government of Thailand to help society regarding regulations, education, and well-being. तो आज के हमारे इस कार्यक्रम के लिए आचार्य ब्रह्म भीष्म जी से उपयुक्त कोई नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो थाई होते हुए उन्होंने अपना जो अध्ययन काल का जो मेजर पोर्शन है वो भारत में व्यतीत किया, गुरुकुल परंपरा में वो पढ़े और भारत की संस्कृति से बहुत ही जुड़े हुए हैं, जड़ों से जुड़े हुए हैं। तो वो एक ब्रिज का काम करते हैं, जैसा कि योग का अर्थ ही है जोड़ना, टू ज्वाइन. सो ही जॉइंस Thailand as well as India too. So I welcome you, Ma'am Alpana and Achan Brahma Bhishma Ji. Now I would like to call upon the stage Miss Alpana Dubey Ji. Please.
Brahma Bhishma ji. I think You come front. my front, one front. Namaskar, Savadika. I hope I am visible. I am now standing a little higher. So, yeah, it is an honor for me to be present here on this occasion of Yogotsav 2022. I would first like to thank Dr. Alka Gupta for inviting me on behalf of the Embassy of India in Bangkok. I also would like to greet Achan Brahma Bhishma ji, Mr. Rabi Sahgal ji. I hope he is also here, President ITCC, and other distinguished members of Indian community who have gathered here to participate in this Yogotsav 2022, which is being commemorated as 100 days countdown to International Day of Yoga 2022. As all of you know that we have started International Day of Yoga since 2015. On 21st of June, we celebrated after the United Nations General Assembly resolution was passed in 2014, and that was also moved by India in the UN. And it's a great kind of victory that this has been recognized at International Day of Yoga. As we all know that yoga has originated from India about maybe thousands of years ago, and it's mentioned in our Vedas, and we have the Rishi Munis who have been practicing yoga, and it has been part of Indian philosophy and life of Indian people for thousands of years, and now it is being practiced by people all over the world with the aim of attaining good health, happiness, well-being. So I think the theme of International Day of Yoga 2022 is also yoga for health, well-being, and peace. So I know that Dr. Alka Gupta is running here this Agat healthcare, and also giving advice to a lot of Indian people and Thai people to practice yoga and how it is practiced in proper form. And it is very important that different forms of yoga, which is including asana, dhyan, and meditation, so these have to be practiced under the expert and practitioner's advice, and then only it is beneficial for us. And during particularly this COVID pandemic for last 2 years, all of us have realized the importance of yoga. If we were not practicing earlier, it is part of like physical fitness, plus it provides mental health also. So I think there are other people who are more knowledgeable about yoga and who have been practicing yoga, who are the experts, so they will tell more about yoga. And I would just like to say that from Embassy of India part that we have been organizing International Day of Yoga, and since last year we have started celebration of AKAM, that is Azadi Ka Amrit Mahotsav, and it will continue till 2023, and Embassy will actively organizing several programs, including International Day of Yoga, and we will seek support of all the Indian community, the yoga institutions, and other such organizations. And this year is again important for both India and Thailand, as we are celebrating 75th anniversary of establishment of diplomatic relations, that we have already launched celebrations. Only on 21st of March, we had this logo unveiling ceremony in the presence of the Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Thailand and Ambassador. And it was like the winning contestant was awarded. There were like more than maybe around 800 participants in this contest. So all these are there, like, these activities are being organized as part of 75th anniversary celebration, and there will be several other such events also where participation of community and other organizations would be required. So I would like to just
wish all the best. I think this event has already been launched by Honorable Minister of Ayush in India and with the other dignitaries and yoga gurus. And so we are just carrying forward this initiative. And I wish Dr. Alka Gupta all the success and congratulate her for being selected as the organization by Ministry of Ayush to organize this event in Thailand. Kapunka, thank you. Thank you so much, ma'am. Now, I would like to call on stage Shri Brahma Bhishma ji. Namaste, everyone present here, and very good morning to everyone. Thank you, Dr. Alka Gupta, for having me here as a chief guest. And it is my honor for today that I have met Mrs. Alpana Dubey. And it is my honor to be here today in front of everyone presenting here. So I will not be taking much of your time, but yes, Dr. Algaz has asked me to talk something on today's program, Yogas for Health and Peace. So I will try to stick to this topic alone and only. I'm not going to any kind of religious or something like that, but I'm trying to talk something about global, that anyone could understand what the yogas is actually. Now, yogas in actuals, if you see many people understand that yogas is good for health, so everyone understand and think that the yoga is a kind of exercise that our physicals is performing for the good health. But in actual, yoga has two parts of it. One is the physical, and another one part is mind. Now I'll come to the mind part later on. First, we talk about the health. Yogas, as we see, how does this formed? How it was invented, discovered, and what purpose is this yogasan is performed? Actually, yoga, as everyone knows, it was invented by the yogis. So what does yogis do? The yogis' main purpose is to remove of all their sorrows and attain the eternal happiness. That's what I'm giving the definitions for everyone could understand that. Okay, next. So if you try to remove all these sorrows, why exercise? Why does he wanted to do some exercise? Because if we know, by meditation he would have removed his sorrows, or by any kind of rituals he could have attained that. But why did they invented yogas or yogasan? So the main purpose of the real yogas is not only for health. Now, yogas or yogi, what do they need to do? They need to have the mental at very calm and very peace. They need to have the mentals attained on the situation that even on cold or hot, they remain the same. It is not that they don't feel heat or they don't feel burn. They do feel, but that what their mind has expressed is always the same. They don't feel tortures. They just know that what happened. To attain this mind and calmness, it is not only the mind that work. It is not only the engine, but we need the body of the car.
That is our body. If our body is weak and unhealthy, attending anything would be very, very difficult and it would take a lot of time. So the yogasana was invented for this purpose. So what happened in yogas? Yogas, you can see after you perform so many yogasana and everything, it always making you calm in that exercise, in that postures, in that asana. So what will happen to us when we attend that? So our mind is calm. So after this exercise, after this yogasana, and you continue to do your work, or you continue to do whatever you wanted to do, for the throughout of the day, you feel like you have made some meditations, some kind of meditation. And that's why yogasana is very, very popular around the world. It is not because of if you do yogas and you are healthier or stronger than you doing the cardios or you're doing the weightliftings. No, that is not the purpose of this yogasana. After you perform so much yogasana and you listen to the instructors, you will understand that the most important in yogasana is not the position, the structures of it, or how much you can stretch, or how perfectly your body is attuned with the instructor. But the main and the core of yogasana is to control your breath. Your breathing is number one. So what happens when you control your breath? You attain meditation. So this is the meditation without you doing the meditation. Number two, what does yogasana gives you next? Because it was invented by the yogis. So what does yogis needed to do? They need to understand each and every part of their body. They have to control each and every part of their body so that they could always remain calmness. So what the yogas do? All the yogasanas aim for you to have the controls of each and every part of your body. When you stretch, you must know which part of your body is used, which part of muscle is used, with the control of breath, meditations, and understand of your body. So the more you do the yogasanas, the more you can control your body. Some people might not have the drawing skills, but if you wanted to have, after you do yogasanas for so many months and so many years, picking up this skill is not difficult. Because why? You have to understand that every skills in this world comes from how well you control your muscles. The only thing that you cannot draw is because you cannot control your hand, your fingers, as your mind wanted it to do. Because you cannot train your mind to be on the some things, on very purposeful of the drawing. So these yogasanas give you two things. One is meditation. So when you have a meditation, you have a calmness. That is the control of breathing. Number two, you control of your physical muscles and body, so you can draw or do whatever you want to do. It is how the yogasanas is helpful for our health. Each muscles is used. People have office syndrome. People have so many other problems. The only people who get office syndrome is because of some of their muscles is overused and some of their muscles is not used. So what happened for our healthy? We have to use all of our muscles parts, all of our muscles, so that in people who are old will not have all the joints problem. It is scientifically proved that the joints problem that people have is because of the muscles is not strong enough to hold your weight when you are old. Because all we do is walk, sit, talk, and our jobs or work mostly on this today is very station. Or if you have to use physical, it's only one part of the physical that you do. It's not other muscles and other parts.
And that is why this yogasana is very must. After you do today, I do not know how many people do it every day, but it is very good for you to do it every day. For me, I do yogasana every day in the form of Surya Namaskar. It is my duty to do it every day in the morning, at least 13 times. So every day, after I do, I attend some kind of meditation without doing the real meditations. And after that, if you wanted to do meditation, you wanted to work, or you really have very urgent work to do, I feel fresh and I could do works. I could perform something very good. It is saying that it is our duty to take care of our health. But we should not attach that we should not die. Everyone will have to die. But it is our duty to prolong that, to stay alive as long as possible. It is everyone's duties. Okay. Now, we have come to understand that this yogasana is very good. So, after you perform yogasanas every day, is it only on this mat? Is the yogasanas that we have to do is very, very strictly to this mat? I will say no. After you do so much of yogasana, you understand your control of breath. You understand your body structure. You understand your control of the body. Every day, you could perform a small part of the yogas in day-to-day life. For example, sitting upright straight. This is one of the very, very common things. We have to understand that if you do not sit in the upright position, our muscles will not get used, and our spinal cord will start bending. For over long of time, the muscle is not strong enough. And then you see people hunch back, their back start hunching in the olden, when they are older. So these all things come from small structures, small position. And that comes from yogasana. After you perform yogasana every day, this is one of the things that everyone will get automatically. So now, we come to understand that, okay, yogasana in physical is very good. But is it that enough for ourselves? As the program said, now I have talked about health. Now we know that the health is very good by doing yogasana. And how does this yogasana help in the peace? Now I have talked about the second part of the yogasana. Yogasana, the second part is the yogasanas of the mind. That is in the form of meditation. Now, when you start doing the meditation of the mind, today I have heard that the next program will be speaking on chanting on Bhagavad Gita. You will see that in Bhagavad Gita, every adhyaya will start, and Lord Krishna will say that everything is yoga. Every adhyaya, the heading always ends with yogas. So what is yogas? Yogas in the mind is a way to practice our brain, to practice our thought on the mind, to be very healthy. A healthy mind will always attain a certain peace, will always bring peace to the world. The only reason that you have a chaotic, it is because the calmness of our mind is disturbed. So this we have to understand. I will not touch about yogasanas of the mind much more, because today we are doing the physically. Now, by doing physically, how does it connected to the peace? As I said, we control our breath. We have meditation. You start feeling calm. If your control of breath is so good, you will forget about your problems. You will forget about your urgent. So when that is happen, so what will happen? You get meditations, your mind is peace,
Next time you get angry, you know yourself that you're angry. Next time you feel sad, you know yourself that you are sad. To control all of your feelings, emotions, and everything, control of every hour parts of body, you have to know yourself. When did you feel that? When did you have this emotion? Only by knowing, you could control them. How to know this yogasana, this thing that we are doing today is very, very helpful. So I think today I have talked a little bit on this kind of thing because I don't want to waste all of your time in doing yogasana today. So this will be my conclusion, and I will give you the last thought. If you can do this yogasana in everyday today life, it is nothing but what people say that as a prayer. What you get from the yogasana and the prayer is not very difficult or different. So I will give you conclusion on the last thing. To do everything in your life, 3 things is very, very important. Bala, Buddhi, and Vidya. So today what we are doing is Bala and Buddhi. Buddhi, how do you get? You will get from your control of breathing. That means today when you do the yogasanas, concentrate on your breathing. This is very, very important. Otherwise, yoga will be just some kind of stretching. And then Vidya, I know everyone learn and study every day. So with these 3 things, anything you wanted to do in your life, it is always possible. Thank you. Dhanyavad. Thank you so much for enlightening us, Brahma Bhishma Ji. We are living in 21st century, yet we refer to our mind as a monkey mind. Isn't it strange that despite of all the advancements we have made in various areas, our own mind is capable of wreaking havoc in our lives? Anxiety, depression, stress have spread like an epidemic across the world. Anxiety disorder is today the #1 mental health concern in the world. According to the WHO, World Health Organization, 1 in 13 people globally suffers from anxiety or any kind of neurological disorder. That's alarming. Naturally, there is something we are not doing right in our lives. Often, we are struggling for solutions, but we are not able to find any solution, especially for neurological disorder, depression, anxiety, stress, what we have in day-to-day life. We turn to our sacred texts and scriptures to show us the right path. The Bhagavad Gita, an ancient Indian scripture, part of our epic poem Mahabharata, is one such text full of timeless wisdom. So जैसा कि ये हमारा कैंपेन प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, 100 cities, 100 ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द ग्लोब, और इस कैंपेन का जो उद्देश्य है वो है कि योग के डिफरेंट डायमेंशंस, योग सिर्फ आसन प्राणायाम या कुछ क्रियाओं का करना ही नहीं है. हमारे वैदिक पुराणों में योग के कई रूप हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग. तो ये अलग अलग मार्ग हैं जिनमें चलकर हमारा ध्येय एक है, साध्य एक है, साधन अलग अलग हैं. तो आज श्रीमद् भगवद गीता का जो अध्याय 12 है, जो कि भक्ति योग का अध्याय है, और आज के समय में भक्ति योग क्यों आवश्यक है? क्योंकि भक्ति योग हमें भक्त और ईश्वर का क्या संबंध होता है? समर्पण का संबंध, प्रेम का संबंध. और हमें जिस समाज में हम रह रहे हैं वहां पर
आज इन्हीं सब चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता है। तो गीता से अच्छा जो हमारा जो मार्गदर्शक है वो कोई नहीं हो सकता। तो आज भक्ति योग का जो सस्वर पाठ करेंगी मिस श्रुत कीर्ति, और वो कंठस्थ करके कर रही हैं, बिना पढ़े करेंगी। तो आप उनका स्वागत करिए जोरदार तालियों से, मिस श्रुत कीर्ति। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम्, दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुख संपदः, द्वेष बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमोस्तुते। आत्म ज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते, ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय, गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। मिस श्रुत कीर्ति। नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्यमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं परयुपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्, अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्। भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः, अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय, अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि, अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः। सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्, श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखक्षमी, सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः,
यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वकर्मफलत्यागन् मुक्तो यः स च मे प्रियः यो नारुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति सर्वारंभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्तियोग नाम द्वादशोऽध्यायः। नमस्ते। बहुत सुंदर श्रुत कीर्ति, वेल डन। Now we have a message from Ministry of Ayush on behalf of Minister of Ayush, Shri Sarbadanandji, and Chief Secretary Rajesh Kotecha ji. So Director MD&Y Dr. Ishwar Basavareddy sir ji will give you a special message on this for this event, as we are celebrating here campaign program of International Day of Yoga 8th. This year we will be celebrating International Day of Yoga 8th edition. So on this special occasion, let's see and listen what he says about this. Namaste. My pranams to you all. I heartily welcome all of you for this Yogotsav, a countdown program for International Day of Yoga 2022. This is the another 86 days to go for the IDY 2022. Ministry of Ayush, Government of India, is very happy to be associated with Agatha Healthcare Bangkok, the organization which is very active in Thailand, in association with the Indian Embassy in Bangkok. During the last 7 episodes of International Day of Yoga, the Indian Embassy in particular, the whole Thailand people have participated in International Day of Yoga activities, practiced yoga, adopted yoga as their way of life for health and well-being. On this occasion, on behalf of Ministry of Ayush, on behalf of Morarji Desai National Institute of Yoga, a collaborating institute, and on my own personal behalf, my gratitude and best wishes for the event. I congratulate Dr. Alka for taking this initiative with a very short notice. Just it is a 10 days notice. And we are so proud, and we are being associated with many such activities during last few years. On this occasion, I would like to highlight
5 important aspects related to International Day of Yoga. You know that yoga is our culture. It's not only the culture of the present India, it is the Bharatavarsha, where it starts from the Afghanistan, Thailand, Myanmar, Bangkok, Indonesia, Sri Lanka, the entire southeast region is yoga is the culture. It is our heritage. Yes, it is evolved and developed in India by the ancient seers, the rishis, the great practitioners of yoga. But it has not confined to only the particular region. It has been spread like a science. Yoga has been spread worldwide. During last more than 100 years, many eminent yoga masters took this message of yoga, of uniting the people for health and well-being, for the world peace, spread the message of the ancient wisdom for the entire mankind. However, on 27 September 2014, the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, has made an appeal to the world population, world leaders, to adopt the International Day of Yoga. It was supported by more than 177 countries and adopted a resolution on 14th December 2014 to observe 21st June as an International Day of Yoga because it is the biggest day. So ever since Government of India and all the missions abroad, we are trying to promote various dimensions of yoga for the humanity, to unite the people, making them to aware of the health benefits of yoga. So we have achieved a remarkable milestone in the journey of nearly 8 years. This is the first. Therefore, the ancient wisdom, ancient cultural and spiritual heritage, now it has become the world heritage. Everybody is embracing yoga. That is the momentum took place in 2014. Now it has become a mass movement. The second important aspect is, so to observe this International Day of Yoga, we have decided to not only confine to some formal seminars, lectures, but we propose to have a yoga practice. Yoga is a sadhana. Then we come up with a 45 minutes common yoga protocol, which has some asana, pranayama, and meditation. So to live healthy, to live well together, in consultation with all the yoga masters across the globe, not only in India. So that is the major achievement. And the first International Day of Yoga, only few million people have joined. Now, during the last, it is more than 157 million people have practiced this common yoga protocol on 21st June, irrespective of pandemic conditions, in a hybrid mode. Wherever it is possible, they join physically, and that means this has become one of the largest public health initiative in the world.
So we should be proud of, because we were practicing this common yoga protocol and adopting yoga as a way of life. They become the leaders of this mass public health initiative. And third is UNESCO on 1st December 2016 has declared yoga as intangible cultural heritage for humanity, and more than 86 organizations have supported, and we had given in writing, we are the custodians of this heritage for humanity. That has taken a new dimension. Now the fourth one, most importantly, why we want to practice yoga. There are three important things are happening in the world, for which are the threats before this pandemic. The one is the global warming and pollution that is making the changes in our lifestyle, in the living conditions, and the less physical activity and more people staying in the metros. And because of that, many non-communicable diseases, more than 78% of the diseases are non-communicable in nature, and they are posing the threats: diabetes, hypertension, cardiovascular disorders, cancer spreading like anything. So this is the threat. And we have several other, the malnutrition and overnutrition. These are all making the impact on our living conditions, health conditions. So yoga has yoga solution. Yes, if you adopt yoga as a way of life, so we reorganize our eating habits, sleeping habits, exercising, mind management by meditation, pranayama. Many of the health conditions why we are going for the medical treatment can be reduced. That will lessen the health budget in all the countries. So there are thousands of research papers published in peer-reviewed index journals which shows the efficacy of yoga in the management of non-communicable diseases. Morarji Desai National Institute of Yoga is a only WHO collaborative center for traditional medicine in yoga. We have come up with evidence-based modules to manage this. We have come up with protocols based on the evidences, which found very useful in the management of many of such disorders. Last but not the least, the fifth one. We have seen during last 2 years, almost 2 years exactly, where the whole world has the pandemic. It may be a COVID patients, the healthcare workers, the home isolated people staying at home during the lockdown, the family conditions, the economic conditions. The whole world has been affected by the COVID pandemic. During this pandemic also, as our institute come up with a yoga protocol for home isolated patients, for the COVID patients, for healthcare workers, and give them directives without any cost. Surprisingly, we were practiced more than 28 days, managed COVID, and they not been affected COVID and its consequences. Even in the rehabilitation of the COVID, after recovery, yoga come to rescue. That means yoga not only for the non-communicable, but in the communicable conditions, in the distressed condition. For that, we use the technologies. We come up with a Yum Yoga app with WHO, 45 minutes, you can download it. We come up with a yoga break, why break? 5 minutes at workplace. Now we are coming up with various other apps
for the management of various disorders. Using the technologies, we are taking this yoga movement to the every house across the globe, not only to India. So that's why this year we have started a countdown, 100 days countdown, 100 cities, 100 organizations, 100 days. And not only celebrating and promoting, but also bring the essence of that city and also iconic places in the map of world tourism. The Bangkok is a very favorite destination for the tourist in India. Many people love to visit Bangkok frequently, and it is very nearer to. So therefore, it's a very friendly people and very lot of cordial relationship between India and Thailand. And Bangkok has been chosen. Agatha Healthcare Organization is just leading from the front in association with the Embassy of India. So now I do hope this momentum in this episode of International Day of Yoga will take a new dimension and reach to the household and spread the message of yoga, and the technology based apps shall be used which are not having any costs. They are in the public domain, they have been vetted, they have been examined by experts, and they have been free for the mankind. Just it is a motivation. I do hope that this event will definitely motivate the people to make them aware of the health benefits of yoga, the technologies available, the apps available, and also make your city a tourism spot in the world tourism map, and we all live together as a one family, Vasudhaiva Kutumbakam, which is the fundamental philosophy of yoga and our culture. With these few words, I once again thank the Ambassador, Honorable Excellency, ambassadors and all the dignitaries present there, and convey my best wishes on behalf of Minister of Ayush, Honorable Shri Sarbanand Sonewal ji, our Secretary Sir, Vaid Rajesh Kotecha ji, and all our senior officers in the ministry and my faculty members from the Moraji Desai National Institute of Yoga, wishing the event a great success. And I conclude, let us join hands in such a way that the whole chain covers the whole world as one family. Jai Hind, Jai Bharat. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Dr. Ishwar sir, for giving us so detailed information about this campaign of Ministry of Ayush in collaboration with Agatha Healthcare. So, as we have yoga quiz and competition today, so here comes first question of yoga quiz. It's very simple, just to make the event more, interactive, and just to check your knowledge also on yoga. So here comes first question. So who will raise hand first will answer, and stand on your mat. So what is the full form of Ayush? What is the full form of Ayush? आयुष का पूरा नाम क्या है? किसी को अगर पता है वो अपनी जगह पर खड़े होकर बता सकते हैं. गूगल अलाउड नहीं है. ओके, दूसरा क्वेश्चन. ये तो क्वेश्चन आंसर है इसका AYUSH. सो फुल फॉर्म है इसका आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी. So 5 stream of Indian traditional medicine system. So it comes as Ayush. तो ये क्वेश्चन
ओके, तो आधा गिफ्ट आपको मैं फिर देती हूँ. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. Day has been okay, Simiji, you please. That's so great. A big round of applause for Simiji. Simiji, please come in front of the stage, and I would like to invite Khun Song. Soul nourished. Now we will nourish our body. So let's do something on mat. As we are celebrating 75 years of आज़ादी का अमृत महोत्सव, so आज हम करेंगे मैट पर सन सैल्यूटेशन. तो हमारा टारगेट है कि यहाँ पर जितने लोग हैं एटलीस्ट 10 टाइम्स करेंगे, सो दैट कि वी विल कंप्लीट ऑल टुगेदर 750 टाइम्स सन सैल्यूटेशन. तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन होगा थाईलैंड से. आज़ादी का 75 जो हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसमें 750 सूर्य नमस्कार की आहुति जाएगी थाईलैंड से. ठीक है, तो इसके लिए मैं बुलाऊंगी स्टेज में शैलेश जी और विनय जी, हमारे दो जो है थाईलैंड के. ये कहेंगे, मैं कहूंगी इनको धुरंधर कहूंगी मैं, क्योंकि अभी जो है जनवरी में मकर संक्रांति के समय जो हमारे आयुष में भी जो ये प्रकल्प चला था 75 लाख सूर्य नमस्कार का, तो उस समय हमारे थाईलैंड में भी हिंदू स्वयं सेवक संघ के भाइयों के द्वारा इस यज्ञ का आयोजन हुआ और जिसमें सबने अपनी अपनी आहुतियां दी. तो मेरे ख्याल से आप में से किसी का 2000 कुछ का रिकॉर्ड है. उन्होंने कुछ एक दिनों में करीब 2500 के करीब सन सैल्यूटेशन किया. बहुत जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत कीजिए. तो अभी हम सन सैल्यूटेशन करेंगे, ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और आप अपने योगा मैट में खड़े होकर अपने पेस के साथ, अपनी स्ट्रेंथ, अपना स्टैमिना, अपनी कैपेसिटी के साथ करेंगे. आप इनके स्टेप्स को फॉलो करेंगे. और इसके पहले मैं एक मंत्र अभी पढ़ूंगी, क्योंकि सूर्य नमस्कार का अर्थ है सन सैल्यूटेशन, मतलब कि सूर्य को प्रणाम करना. और सूर्य को क्यों, आखिर इसका हमें अर्थ भी समझना चाहिए. अगर हम योग की भाषा में बोलें तो सूर्य नमस्कार अपने आप में एक कंप्लीट एक्सरसाइज तो नहीं बोलूंगी, यौगिक क्रिया है जिसमें प्राणायाम भी है, श्वासों का महत्व है, श्वास प्रश्वास कब रोकना है, कब ले जाना है, कब छोड़ना है, शारीरिक मुद्राएं हैं और इसमें आध्यात्मिक उन्नति भी है. क्योंकि हम इसको जब हम सुबह सूर्योदय के समय सन फेसिंग करके हम सूर्य नमस्कार करते हैं, तो इससे हमें शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एज वेल एज साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स आर देयर व्हेन वी प्रैक्टिस सन सैल्यूटेशन. तो आज मैं आपको बताऊं, अगर आपको स्वस्थ रहना है और आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं होता अलग अलग आसनों को करने के लिए, अलग अलग प्राणायाम करने के लिए, भाग दौड़ की जिंदगी है, आप अपने जीवन में सूर्य नमस्कार का हिस्सा बना लीजिए और इसको 3, 4, 5 की संख्या से शुरू करिए. 11, 21, 31, 51 कितने भी संख्या तक आप कर सकते हैं और आप कभी भी अस्वस्थ नहीं होंगे. क्योंकि इससे आपके जितने भी शरीर के जितनी भी ग्रंथियां हैं, हार्मोन्स हैं, जितने भी ग्लैंड्स हैं, एक एक हार्मोन का सिक्रेशन इसमें बैलेंस होता है. आपका जो बॉडी है अलाइन होती है, बॉडी माइंड सोल का अलाइनमेंट होता है. सो दिस इज वन ऑफ द परफेक्ट यौगिक क्रिया. तो आज हम इस चीज की एक ओथ भी ले सकते हैं कि हम
ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये एक अवेयरनेस इवेंट है कि क्यों हमें योग को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना है। कहीं ना कहीं हम सब किसी न किसी व्याधि से ग्रस्त हैं, वो चाहे फिजिकल डिजीज हो, मेंटल डिजीज हो, या किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, और कोई बीमार नहीं रहना चाहता। तो क्या उपाय है? उपाय है कि आप योग को अपने जीवन में शामिल करें और अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार रोज इसका अभ्यास करें। तो मैं अभी सन सैल्यूटेशन का एक मंत्र पढ़ूंगी और इसके बाद हमारे मंच में जो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए खड़े हैं वो करेंगे और आप अपनी गति के अनुसार सन सैल्यूटेशन करेंगे। श्री सवित्रो सूर्य नारायणाय नमः। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनम सूर्यपादोदकं तीर्थम जठरे धारयाम्ययाम् जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महाद्वितिं तमोरि सर्व पापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम। अब हम शुरू करेंगे। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। आप लोग करिए, हाँ शुरू करिए। उनकी गति से आप मत मिलाइए, आप अपनी पेस से करिए। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। Okay, now I will count the number. First we will do in Namaskar Mudra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hold in this position for 10 seconds. Bhujangasana, cobra pose. 8, 9, 10, 11, 12. Okay, now again. 1, pranam mudra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Namaskar mudra. Again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इस पोजीशन में खड़े रहेंगे 10 सेकेंड तक। क्लास में कभी मुर्गा बने हैं? नहीं तो आज मैं बनवा रही हूं। 9, 10, 11, 12. नमस्कार मुद्रा। ओके, वन लास्ट टाइम। थक गए लग रहा है। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इस पोजीशन में 10 सेकेंड के लिए खड़े रहेंगे। 9, 10 सेकेंड के लिए इस पोजीशन में खड़े रहेंगे। ऊपर देखेंगे, स्काई की तरफ, ऊपर छत की तरफ देखेंगे।
9, 10. हाँ, अब इस पोजीशन में भी 10 सेकेंड खड़ा रहना है. 11. Go back, go back, go back. 12. नमस्कार की मुद्रा सब एक साथ बोलेंगे. ओम सूर्याय नमः. 5 बार इसको लगातार बोलना है. ओम सूर्याय नमः. ओम सूर्याय नमः. ओम सूर्याय नमः. ओम सूर्याय नमः. आप स्टेज में 10 बार और करके दिखा दीजिए इनको, तो इनको थोड़ा सा उत्साह मिलेगा कि हमें रोजमर्रा के जीवन में सूर्य नमस्कार को करना है. ओके, नाउ स्टार्ट. ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः. 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 ओके, सो ये आज का एक छोटा सा सेशन था सन सैल्यूटेशन का, सूर्य नमस्कार का. तो आज आप हाथ उठाइए, कौन कौन आज से सूर्य नमस्कार को अपने रोज के जीवन में शामिल करेंगे. अभी कुछ हाथ नीचे हैं, उनको भी उठना चाहिए. अगर उसमें कुछ मार्गदर्शन चाहिए तो वो हमेशा है, और इसका जब आप करेंगे तभी इसका लाभ मिलेगा. ठीक है, तो मैं 1 मिनट में 8 बार करती हूँ सूर्य नमस्कार. ठीक है, 1 मिनट में 8 बार. तो ये असंभव नहीं है. आपको स्वस्थ रहना है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से. तो सूर्य नमस्कार को आप अपने जीवन में अभ्यास में शामिल करिए. अभी आज के क्विज का तीसरा क्वेश्चन है अष्टांग योग. अष्टांग योग, 8 फोल्ड्स ऑफ अष्टांग योग. 8 स्टेप्स क्या हैं अष्टांग योग के, 8 चरण. किसी को पता है तो वो हाथ उठाकर बताएंगे. ओके, यू प्लीज कम. हाँ, यस. So very good, thank you so much, and please stay here. I would like to call आशीष करपे जी हमारे बीच में है. ये हिंदू स्वयं सेवक के थाईलैंड के जो हेड हैं. मैं उनसे आग्रह करूंगी कि आज के इस क्विज के विजेता को वो एक स्मॉल टोकन ऑफ लव दे. ओके, ओके. सो अब इस कार्यक्रम का जो लास्ट सेगमेंट है कॉमन योगा प्रोटोकॉल का,
कॉमन योगा प्रोटोकॉल मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा बनाया गया एक ऐसा प्रोटोकॉल है कि इसको एक छोटे बच्चे से लेकर और बूढ़े तक व्यक्ति इसको कर सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए बनाया गया प्रोटोकॉल है और इसमें पोस्चर्स हैं, इसमें प्राणायाम है, इसमें चैंटिंग है। तो ये एक कंप्लीट होलिस्टिक और साइंटिफिकली इवॉल्व करके बनाया गया एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल है, जिसका डेमोन्स्ट्रेशन करेंगी मिस श्रुतकीर्ति खुन पार्वती। सो आई वुड लाइक टू कॉल देम ऑन द स्टेज, दे विल डेमोन्स्ट्रेट एंड वो करेंगी और आप उसको एक एक स्टेप्स को जितना फॉलो कर सकते हैं स्टेप्स के साथ उसको फॉलो करेंगे एंड देन यू विल फील कि क्या एक्चुअली योग है और इसका कितना लाभ है। जब आप इसको अभी करेंगे तो अभी आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। So we have today two experts, yoga experts, Khun Parvati from Pattaya. Let's welcome Miss Shrutkirti. So they will going to demonstrate common yoga protocol. So इसको मैं बता देती हूँ कि किन किन स्टेप्स में हैं। इसमें हम पहले खड़े होकर कुछ सूक्ष्म व्यायाम जिसको कि हम लूजनिंग प्रैक्टिसेस, जो हमारे जॉइंट्स को लूज करने के लिए, छोटे छोटे जो हमारे बॉडी के पार्ट्स के जो जॉइंट्स हैं, जो रोजमर्रा के जीवन में स्टिफनेस आ जाती है, कोविड के समय स्पेशली बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग सिटिंग होती है, ज्यादातर बैठने का काम है। तो ये जो छोटे छोटे अभ्यास हैं इनको आप ध्यान से करिएगा और इसमें श्वासों का बहुत महत्व है। व्हेन टू इनहेल, व्हेन टू एक्सहेल, व्हेन टू होल्ड योर ब्रीदिंग। तो इन सब इंस्ट्रक्शंस के साथ हम आज का ये कॉमन योगा प्रोटोकॉल करेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद द प्रेयर। सो स्टैंड स्ट्रेट विद प्रणाम मुद्रा। आई विल रिसाइट प्रार्थना, देन वी विल स्टार्ट कॉमन योगा प्रोटोकॉल। संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनासि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओ okay, so we will start with chalan kriyas, loosening practices. First we will do neck bending. जो गर्दन है इसको हम लोग को बेंड करना है, फ्रंट, बैक, साइड, right side, left side, then it will come to neck rotation, twisting. So we will start neck bending. Stand with the feet 2 to 3 inches apart.
2 से 3 इंच का फासला दोनों पैरों के बीच में. Keep the hands straight beside the body. Keep your palms on the waist. While exhaling, move the head forward slowly. श्वास को बाहर फेंकते हुए अपनी गर्दन को आगे लाना है. And try to touch the chin to the chest. 4-10 सेकेंड हम इसी पोस्चर में हम स्टेबल रहेंगे. Chin touch, try to touch your chin to the chest. Now inhale and go back. As much as you can go back. And now freeze this position for 10 to 15 seconds. It can be free. You can be stable on this position 30 seconds, up to 30 seconds. It's your capability, it's your stamina, it's your body's strength. So one more time we will do. Forward, backward. So this was the one round. As it is a demonstration, so we will show how to do, and you can do practice 4-5 times each of these steps. So it's very good. Person who are on screen for long time, for students who are sitting for long time, prolonged sitting workplace. So it's very good, and immediately you will see that your neck stiffness, strain, it will be gone immediately. Now we will do next pose, right and left bending. So we will do bending right side, then left side. So while exhaling, bend the head slowly to the right. Put your hands on your waist, same position, and try to touch your ear to the shoulder. Don't raise your shoulder. अपना कंधा उठाना नहीं है. अगर कान आपके कंधे से टच होता है, बहुत अच्छी बात है. इस पोजीशन में होल्ड रखिए बॉडी को. 10 to 30 seconds we can hold on this position. Now come back. Inhale and come back. Same we will do opposite side. Left side. And come back to the normal position. One more time we will do right and left. In exhale and come back to the normal position. Now left. We will do now right and left twisting. आपके हाथ कमर में ही रहेंगे अभी. Keep the head upright. While exhaling, gently turn the head to the right so that the chin is in line with your shoulder. Your chin should be aligned to the shoulder. कंधे और chin दोनों का alignment होगा. So as much as you can twist, you twist your head and hold this position for 10 seconds. Now come back to the normal position. Same we will do opposite side, left side. Do one more time, right and left. Now we will do neck rotation. Exhale, सांस को बाहर फेंकिए. Bend the head forward to touch the chin to the chest. Inhale, slowly rotate the head clockwise in circular motion. First, we will do clockwise slowly. Make sure you should do this action very slowly, otherwise there may be jerk in your head area, neck area. So clockwise, same we will do anti-clockwise in slow motion, in slow circular motion. So we can do it 4 to 5 times every day. So these all small exercises, loosening practices, chalan kriyas, sukshma vyayam. So this is good for microcirculation for this, especially this lumbar region, and especially good for cervical people who are having, nowadays cervical has become very common problem because of prolonged sitting. So this is very, very good. So you can do while you are sitting on your chair in your office, anywhere, standing or sitting, in both position, you can do all these small exercises.
Okay, now we will do shoulder movement. So these were some exercises for your neck area with the head rotation, head bending. Now we will do shoulder rotation. Stand erect. Place the fingers of left hand on the left shoulder, right hand on right fingers on the right. So you should put like this. Your finger should not be spreaded like this. You should put like this. Okay, now full rotation of your both elbows in circular motion. So while you do rotation, your elbows should touch in front of your chest, and make sure while you are coming back, your elbows should touch your sideline, your trunk. Yes. So make a complete circular motion with your elbows, clockwise, anti-clockwise. And you can feel stretching on your back, on your this neck area, your shoulder. This is one of the best exercise for frozen shoulder. Nowadays frozen shoulder has become very, very common problem. So this is one of the best exercise for frozen shoulder and cervical spondylitis. Now we move to trunk movement. Keep the legs about 2 to 3 feet apart. दोनों पैरों में 2 से 3 फीट का हम फासला रखेंगे. Raise both the arms up to the shoulder. Raise both arms up to the shoulder level with palm facing each other, and keep them parallel to your shoulder. It should not make a V shape or something. It should be parallel to your shoulder. Now while exhaling, twist the body towards the left side so that the right palm touches your left shoulder. So see, आप डेमोन्स्ट्रेटर्स को देखिए कैसे करना है. आप दोनों हाथों को पैरेलल ऐसे घुमाएंगे तो ये राइट हैंड पाम आपका लेफ्ट शोल्डर में टच होना चाहिए. नाउ इनहेल, come back to the normal position. Same we will do in opposite side, left side. Exhale. Hold in this position for 10 seconds. And come back to the normal position. So we can do this exercise 2 to 3 times every day. Now we will do knee movement. Okay. Inhale. Close your legs. 2 to 3 inches, almost distance should be there in between the legs. Inhale, lift your arms up to the shoulder level, palms facing downwards. हथेलियां जमीन की तरफ होंगी. Exhale, bend the knees and bring down the body to the semi-squatting position. Look at them, semi-squatting position. And now hold in this position for 10 to 15 seconds at least, up to your capacity, up to your stamina. Don't overstrain your body. If you can do it. It is good for your waist area, your back pain, your thighs muscle, your knee muscle, your calf muscle. If you are having sciatica, if you are having ankle pain. So these kind of problems are resolved when you do this practice, semi-squatting pose. Okay, so knee. Okay, now come to the normal position. Okay, so these were a few small exercises, loosening practices of head, neck, shoulder, knee. Now we move to postures, asana. Okay, so actually this is common. We are not practicing complete yoga protocol because of time constraint. So we will do few exercises, and complete yoga protocol can be practiced in normal life. We can make part of our life. So standing postures, Tada Asana. So first posture is Tada Asana. As the name, Tada means palm. Yes. So stand with feet 2 inches apart. 2 इंच का फासला होना चाहिए दोनों पैरों में. Inhale. Lift your arms up to the shoulder level in the front. Interlock the fingers. Interlock the fingers. No, like this. And turn the wrist like this, outward. Interlock the fingers and turn the wrist outward. Now inhale, raise the arms up above your head. आपके दोनों जो interlocked hands है, आपके head के ऊपर होना चाहिए. कान से सटे हुए दोनों हाथ. Okay. Now raise the heels off.
जो हमारी एड़ी होती है, हील, उसको ऊपर उठाना है और अपनी उंगलियों पर खड़ा होना है, हमें अपने टोस पर खड़ा होना है और इस पोजीशन में 10 से 15 सेकंड खड़े रहे एंड यू कैन फील स्ट्रेचिंग इन कंप्लीट, पूरी बॉडी में आपको स्ट्रेचिंग फील होगी एंड इट इज वेरी गुड फॉर री एनर्जाइजिंग योर बॉडी. इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ फटीग, टायर्डनेस और you are sleepy, you just do this stretching exercise 4 to 5 times. Immediately you will feel very, very nice and light. So this was Tad Asan. Now we will move to Vriksha Asan. As name shows, what does it mean? Tree pose, tree posture. Stand with feet 2 inches apart. दोनों पैरों के बीच में 2 इंचों का फासला होना चाहिए. फोकस ऑन अ पॉइंट इन फ्रंट. अपने सामने किसी भी एक चीज पर आप फोकस करें, एक पॉइंट पर. So why we are making focus on one point? Because this posture is helpful for concentration, for stability, good for students. बच्चों को प्रॉब्लम होती है कंसंट्रेशन की, बहुत ज्यादा बैठ नहीं पाते, बहुत ज्यादा ग्रास्प नहीं कर पाते, तो जब वो वृक्ष आसन का अभ्यास करेंगे तो वो बहुत ज्यादा उनका फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बॉडी अलाइनमेंट होगा, बॉडी और जो है हमारा जो ब्रेन है, दोनों का न्यूरो मस्कुलर जो कोऑर्डिनेशन है वो बढ़ता है इससे. तो नाउ how to do? Stand with feet 2 inches apart, focus on one point, exhale, hold and bend the right leg, then place the foot on the inner side of your left thigh. Look at them, how to do? दाहिने पैर को बाएं पैर के थाइज के साथ लगाना है और जितना अंदर तक आप ले जा सकते हैं इनर पार्ट तक, उतना अच्छा होगा अपने शरीर की क्षमता के अनुसार. Now inhale, extend the arms up, join the palms together and make Namaskar Mudra. This is Namaskar Mudra and hold on this position for 10 to 15 seconds. देखिए कितना मुश्किल होता है, हम 10 सेकंड भी एक पोजीशन में नहीं खड़े हो सकते, लेकिन जब हम इस पोस्चर का हम प्रैक्टिस करते हैं, इस आसन का अभ्यास करते हैं, तो हमारा एक स्थिति में बैठने का, खड़े होने का, काम करने का अभ्यास बढ़ता है और यही हमें मन को शांत करने के लिए चाहिए. मन हमारा चंचल होता है, भागता है, हमारे सेंसेस हमारे कंट्रोल में नहीं होते. तो वृक्ष आसन के अभ्यास के साथ हम अपने सेंसेस पर कंट्रोल पाते हैं, अपनी बॉडी पर कंट्रोल पाते हैं और एक अलाइनमेंट होता है हमारे बॉडी एंड माइंड पर. ठीक है, तो वृक्ष आसन का अभ्यास इसी तरीके से हम दूसरे पैर से करेंगे. फ्रॉम लेफ्ट साइड, नाउ पुट योर लेफ्ट लेग सेम राइट लेग के जो पेरिनियम रीजन है उसको टच करना है. अगर आप कोशिश करें पेरिनियम रीजन में आपका जो लेफ्ट लेग है वो अंदर तक जाए. इसी तरीके से नमस्कार मुद्रा में दोनों हाथ ऊपर ले जाएं और अगर कोशिश करें कि कान से हाथ टच हो, सीधा एकदम स्ट्रेट, कंप्लीट स्ट्रेचिंग तभी होगी. यस, एंड होल्ड योर बॉडी इन दिस पोजीशन फॉर 10 to 15 seconds at least. No, 2 to 3 seconds. Okay. So this was Vriksha Asan. Now we move to Padhasta Asan. Pad means pair, Hasta means hands. So in this position we use Padhast means we touch our legs with our palms. So how to do? Stand straight with 2 inches apart, feet with 2 inches apart. Inhale slowly. Raise the arms up. Stretch a body from the waist. आपकी कमर में खिंचाव होना चाहिए. आप इतना हाथ को ऊपर ले जाएं कि आपके कमर में आपको खिंचाव महसूस हो. Exhale and bend forward until both palms rest on the ground. कोशिश करें कि आपकी जो दोनों हथेलियां हैं वो जमीन से टच हो. नहीं टच होती तो आप अपना पकड़ सकते हैं, आप नी तक भी टच कर सकते हैं. काफ मसल, शरीर पर जोर नहीं देना है, जितनी जिसकी क्षमता है, क्योंकि शरीर धीरे धीरे फ्लेक्सिबल बनता है. एंड यू कैन बेंड इन दिस पोजीशन फॉर 10 to 15 seconds. And now inhale slowly, come back to the normal position. So this was Padhasta Asan.
Now we will do Ardha Chakra Asana, half wheel posture. Stand straight with 2 feet inches apart. Support the back at the side of your waist with the fingers. आपकी fingers सामने होना चाहिए और thumb पीछे होना चाहिए. आप demonstrators को देख सकते हैं. Try to keep the elbows parallel. आपकी body के parallel ये होना चाहिए, आगे पीछे नहीं, ये parallel होना चाहिए. Drop the head backward, stretching the neck muscle. अपनी गर्दन को पीछे ले जाएं और जितना ज्यादा stretching आपका जो neck का है वो हो सकता है, आप गर्दन को पीछे ले जाएं और इसी पोजीशन में रुकें. 10 to 15 seconds, up to 30 seconds, you can hold your body in this posture and it is very good for your back pain. Back pain आजकल बहुत common है, बहुत common है. और when you practice this Ardha Chakrasana, you will feel the benefit of this posture. Now exhale, come back to the normal position. So this was Ardha Chakra Asana. Now we move to Trikona Asana. Stand with your feet with 3 feet apart. 3 feet का फासला होना चाहिए आपके पैरों में. Inhale slowly. Raise both the arms sideways up to shoulder level. Straight. Your shoulder and your arms should be like this, straight line. आप थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं अगर हाथ एक दूसरे से अगर टकरा रहे हैं. Exhale, slowly bend to the right side and place the right hand fingers just behind the right foot. अगर इंस्ट्रक्शन नहीं समझ में आ रहा, आप डेमोन्स्ट्रेटर को देख सकते हैं. The left arm straight in the line with the right arm. Turn left palm forward. अब आपको क्या देखना है, जो हाथ ऊपर उठाया उसकी मिडिल फिंगर को गेज करना, उसको आपको देखना है. Middle finger of your left arm and hold this position for 10 to 15 seconds. Don't move, don't shake your body. Be stable. Now, inhale, come back to the normal position. We will do in different position. Bend left side with the right hand and look at the middle finger. Gaze for 10 seconds at least. Okay, come back to the normal position with inhalation. So while we do Surya Namaskar, Sun Salutation, breathing is very important. When to inhale, when to exhale, when to hold. Because through breathing, it's not only oxygen, it's a prana vayu. Your all body parts, your cells, your tissues, each and every body part gets oxygen. Not only oxygen, but when you do it in front of sun, you get vitamin D, vitamin B12. So nowadays, deficiency of these two things are on rise. So try to do in front of rising sun. If you cannot do, okay, no problem, in open area where you can get fresh oxygen. So this is demonstration. So we are doing in closed atmosphere. So now we move to Ardha Ushtrasana. Sit in Vishramasana with the folding legs. Okay. आराम मिला बैठने से. So now अब बैठने का ही काम है, रिलैक्स हो जाइए, अब खड़े होने का काम खत्म. सिट विश्रामासन, कम टू दंडासन. आपके दोनों पैर स्ट्रेट. दंडासन, दोनों पैर सामने स्ट्रेट. बॉडी एकदम सीधी, स्पाइन सीधा, बॉडी इरेक्ट, हेड बिल्कुल सीधा, दोनों हाथ साइड में. Now fold your legs and sit in Vajrasan. Look at them. Vajra आसन, दोनों पैरों को मोड़कर और दोनों पैरों को मोड़कर पीछे ले जाना है. और जो हमारे हील्स हैं उनके ऊपर हमारा बटक जो है, बट एरिया है, वो हमारे हील्स के ऊपर होगा. एंड कीप योर बॉडी स्ट्रेट, इरेक्ट. ओके. Place the hands on the hips, back side. You can one of you just turn. Okay. And show how to do on back side. No, turn. Okay. Now place the hands on the hips with fingers pointing downwards. Straight your body. Now
stand your knees or stand on your knees, straight your body, put your hands on your butts, fingers should be downward, keep the elbows and shoulders parallel, keep the elbows and shoulders parallel, okay, and bend backward. As much as you can bend your head backward, you bend and hold for 10 to 15 seconds if you can. Otherwise, don't overstrain your body. Always remember what is my body's capacity, how much I can do, because our stamina increases slowly and gradually, not overnight. So don't overstrain your body. Now, come back to the normal position. Okay, now we will do camel pose. So we will sit in this position, sit in Vajrasan, stand on your knees, and we will touch our heels with the right arm, right heels, left arm, left arm, left palm, and left heel. Yes, and bend back. And look at the sky, at the roof, ceiling. Yes. So if you can hold your both the heels with the both respective hands, hold it, ऊपर देखना है, और इस पोजीशन में बॉडी को 10 से 15 सेकेंड 30 सेकेंड तक भी हम होल्ड करके रख सकते हैं. सो दिस इज वेरी गुड फॉर योर होल स्पाइन एरिया, नेक, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स के लिए ये बहुत अच्छा आसन है. नाउ वी मूव टू very relaxing posture. Anyone can tell? शवासन का एक स्टेप पहले है, क्या नाम है? मकरासन. So we will lie down on stomach. पेट के बल लेट जाना है. कैसा लग रहा है सबको? बहुत अच्छा. Okay. Lie down on your stomach with feet wide apart. पैरों को V शेप बनाकर खोल लें. पैरों को आराम से अच्छे से खोल सकते हैं V शेप बनाकर. दोनों हाथों को एक के ऊपर एक पाम रखकर और हेड को इसमें रेस्ट मोड में रखना है. दोनों हाथों को पाम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और आराम से सिर को टिल्ट करके राइट साइड गर्दन को मोड़ के रिलैक्स. Just relax. Okay, someone wants to do this for half an hour. They are saying we can hold this position for half an hour. Okay. So this is Makar Asan. So when you do rigorous exercise, asanas, postures, so this is something which gives you relaxation. Your whole body get relaxed, and whatever physical energy you have lost, you can regain while you do Makar Asan. अभी थोड़ा आराम का समय खत्म है. एक पोस्चर हम करेंगे भुजंग आसन. This is also something very good and you will feel very relaxed. So put your both arms in front of your shoulder and raise your neck backward up to the navel region. आपकी नाभि तक अपनी बॉडी को ऊपर उठाना है और छत की तरफ देखना है. ऊपर, यस, ऊपर देखना है. एक इसी पोजीशन में 10 सेकंड तक मैं काउंट करूंगी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Come down. So हम जब नीचे आते हैं तो क्या करते हैं? इनहेल की एक्सेल. वेरी नाइस. श्वासों पर बहुत ध्यान देना है, कब लेना है और कब छोड़ना है. तो ये भुजंग आसन बहुत अच्छा है फॉर योर शोल्डर, फॉर योर बैक पेन, फॉर एनी स्पाइनल रिलेटेड प्रॉब्लम. दिस इज वेरी गुड. नाउ वी विल लाई डाउन ऑन आवर बैक. अब पीठ के बल लेट जाएं. दोनों पैरों को मोड़ लें, बेंड
both legs at the knees and bring the heels near the buttock. दोनों पैरों को नी से मोड़कर और जो आपकी एड़ियां हैं उसको अंदर तक लाएं, बट एरिया तक लाएं जितना आप मैक्सिमम ला सकते हैं. While holding both the ankles firmly, दोनों हाथों से आप अपनी एड़ियों को पकड़ लें tightly. Now raise your trunk up. पेट से शरीर को ऊपर उठाना है. शोल्डर नहीं उठेंगे, हेड नहीं उठेगा, आपके चेस्ट एरिया और ट्रंक एरिया जितना आप ऊपर उठ सकते हैं आप ऊपर उठाएं बॉडी को. इसमें भी प्राइज है जो सबसे ज्यादा ऊपर उठाएगा और सबसे देर तक रखेगा. हाँ, ओके, वेरी नाइस. थोड़ा सा भी लेकिन प्राइज के लिए कसर है. नहीं, आपसे ज्यादा उनका है. अभी एक कंटेस्टेंट है वहां पर प्राइज वाले. ओके, नाउ स्लोली कम डाउन. वन मोर टाइम वी विल डू. वन मोर टाइम. अभी भी प्राइज जीतने का मौका है अगर कोई ज्यादा देर तक और ऊंचा उठकर कर सकता है तो. अदरवाइज एक विनर है ऑलरेडी जो लगातार अभी तक खड़े हुए हैं शुरू से. वेरी नाइस. आपके लिए स्पेशल गिफ्ट. जिन लोगों को हर्निया है उनको इसको अवॉइड करना है. कुछ चीजें डूज एंड डोंट्स होती हैं जो कि हम एक ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर, योगा टीचर और एक प्रोफेशनल के साथ हम जब करते हैं तो हमको अपने शरीर की स्थितियों के साथ पता चलता है क्या करना है क्या नहीं करना है. तो दिस वाज सेतुबंध आसन. दिस इज कॉल्ड सेतुबंध आसन, ब्रिज पोज. ये पुल की तरह बनता है ना. हमारे शरीर में लोअर बॉडी पार्ट और अपर बॉडी पार्ट के बीच में हम एक ब्रिज बनाते हैं. वेरी नाइस. यस. नाउ कम टू द नॉर्मल पोजीशन एंड लास्ट पोस्चर ऑफ द डे इज पवन मुक्त आसन. ओके, फोल्ड योर बोथ नीज एंड होल्ड योर बोथ नीज विद योर इंटरलॉक्ड फिंगर्स. दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके और दोनों नीज को आपको क्लास्प करना है और यहां से सिर ऊपर उठाना है और नी से आपकी चिन को टच करना है. इस पोजीशन पर भी प्राइज है जो टच करेगा प्रॉपर लॉन्गेस्ट टाइम. मैं देख रही हूं, आप लोग करने पर ध्यान दीजिए नहीं तो प्राइज नहीं मिलेगा फिर. बिल्कुल बॉडी स्टेबल. टच योर चिन विद द नीज. वेरी नाइस. ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल. वेरी नाइस. ओके, तो प्राइज के लिए तो मैंने चुन लिया है. ओके, इट्स सरप्राइज. एनीवन कैन गेस कि किसका नाम हो सकता है प्राइज में? सभी का. ठीक. अब हम लेफ्ट साइड लेकर और आराम से बैठ जाएंगे. प्राणायाम. अच्छा, तो अभी मैं पहले प्राइज दे देती हूं. आपका शुभ नाम? यस. For Setubandhasan, he is the winner. He did for longest time. Please come here. Please come. I would like to invite Shri Raj ji to come near the stage and give him a token of love. Okay. Okay, wait. Okay, please. Next winner, Pavan Muktasan. आप. Yes, you.
सो हमारे बीच में कपिल राय जी हैं, HSS के बौद्धिक प्रमुख हैं. मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो आकर जी. Okay, now we will move to our last segment of the day, pranayam section. So we will do 3 pranayams today: Kapalabhati, Nadi Shodhan, and Bhramri pranayam. Okay, so sit in any comfortable posture, Sukhasan, Ardha Padmasan. Demonstration you can see, this is Padmasan. Ardha Padmasan, you can put only one leg on your thigh, and Sukhasan, you just sit in normal position. So whatever you find normal position and comfortable, sit, close your eyes. Now this is very very important segment of the day, pranayam. तो इसको हमें बहुत ही फोकस के साथ श्वासों पर ध्यान रखकर इसको करना है. एक एक श्वास, मतलब हम जब श्वास को भरते हैं तो वो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, वो हमारी प्राण वायु है. और हम कोई भी प्राणायाम जब हम करेंगे एक रिजोल्यूशन के साथ करेंगे, एक संकल्प के साथ करेंगे कि मैं जो ये प्राण वायु मेरे शरीर में अंदर जा रही है ये एक औषधि के रूप में काम करेगी. ये सिर्फ मैं ऑक्सीजन को अंदर नहीं ले जा रहा हूँ या ले जा रही हूँ, ये एक मेडिसिन है. ये मेरे शरीर के सभी टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगी, सभी व्याधियों को दूर करेगी, जितनी भी नेगेटिविटी है वो हमारे शरीर से बाहर जाएगी. और जब हम एक्सेल करते हैं तो नेगेटिविटी को एक्सेल करेंगे, और जब हम इनहेल करते हैं तो पॉजिटिविटी को हम इनहेल करेंगे. तो सिट इन ज्ञान मुद्रा. ज्ञान मुद्रा, योर index finger and thumb should touch like this. Rest 3 fingers should be joined like this. Put your hands on your knees. And what to do in Kapalabhati? You forcefully exhale. इसमें आपको श्वासों को बाहर फेंकना है फोर्स के साथ. और इसकी जो गति है, स्पीड है, 1 सेकेंड में 1 एक्सेलेशन, and in between 2 exhalation there will be automatically done 1 inhalation. Okay, इसमें गले से आवाज नहीं निकालनी है, आवाज नहीं आनी चाहिए, बॉडी हिलनी नहीं चाहिए, शोल्डर बिल्कुल स्टेबल, स्पाइन इरेक्ट, चेहरा स्माइलिंग फेस के साथ करना है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ करना है. So we will do it for 2 minutes. Every second 1 exhalation. Close your eyes. और एक संकल्प के साथ कि हम इसमें जो श्वास हमारी बाहर आ रही है, ये सिर्फ श्वास बाहर नहीं आ रही है, हमारे शरीर के विकार, टॉक्सिन्स बाहर आ रहे हैं, व्याधियां बाहर आ रही हैं, नकारात्मकता बाहर आ रही है. मेरे शरीर, चूंकि शरीर हमारा एक मंदिर है और मंदिर में सिर्फ शुद्ध, सात्विक और स्वस्थ चीजें ही रहनी चाहिए. तो ये जो क्रियाएं होती हैं योग की, ये हमें सात्विकता की ओर ले जाती हैं, हमारा सत्व गुण को बढ़ाती हैं. तो जब हम इन अभ्यासों को सिर्फ ये फिजिक एक मैकेनिकली नहीं करना है, हमें जब भी हम प्राणायाम करें, योग करें, एक संकल्प सिद्धि के साथ करें. क्योंकि देखिए, जब हम संकल्प, जो विचार है वही हमारा कर्म बनता है, और हमारा कर्म ही हमारा व्यक्तित्व बनता है, और वही हमारी डेस्टिनी बन जाती है. तो संकल्प का जीवन में बहुत महत्व है. आज आप संकल्प लेकर अगर यहाँ से जाएंगे कि मुझे स्वस्थ रहना है किसी भी माध्यम से, और योग एक ऐसा शस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, जिससे आप हर प्रकार के रोगों को, अपने जीवन में आई हुई दरिद्रता को दूर ले जा सकते हैं. तो कपालभाति करते रहिए, आप सुनते रहिए और करते रहिए, आराम से करिए. तो इसको एक स्वस्थ व्यक्ति, अगर टाइम नहीं है, 5 मिनट रोज में सुबह कर सकते हैं. खाली पेट करना होता है, एम्प्टी स्टमक शुड बी डन, सो इट गिव्स कंप्लीट बेनिफिट. डोंट डू इफ यू आर लाइक फुल स्टमक, आप खाना खाने के तुरंत बाद नहीं इसको करना है. इसमें फोर्सफुली एक्सलेशन करना है,
और इनहेलेशन इसमें ऑटोमेटिकली होता है. So this is good for your respiratory system. In कोरोना पीरियड हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे अधिक प्रभावित हुआ, हमारे लंग्स सबसे ज्यादा डैमेज हुए. जिनको भी कोरोना हुआ या कोरोना की आंच में वो लोग आए, तो अब आज लंग्स को अगर मजबूत बनाना है तो कपालभाति का रोज हम सही विधि, सही मात्रा, सही संकल्प के साथ रोज इसका अभ्यास करना है. गुड फॉर योर डाइजेशन सिस्टम, फॉर कॉन्स्टिपेशन, फॉर फ्लैटलेंस, फॉर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम. So it has enormous benefits when you do Kapalbhati in the right way, in the right time, in the right quantity, in the right process. Okay, so this was one round of Kapalbhati. Now we will move to next pranayam. This is called Anulom Vilom pranayam. Anulom Vilom means alternate, one by one. So why this is called alternate breathing? Because in this pranayam we use both the nadis, Ida and Pingala. So alternate breathing we do in this pranayam. And what happens when we do alternate breathing? जब हम बाईं तरफ से श्वास को भरते हैं तो हमारा राइट ब्रेन हेमिस्फीयर जो है एक्टिव होता है, और जब हम राइट से लेते हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर. और दोनों जो ब्रेन हेमिस्फीयर है इनका अलग अलग काम है हमारे जीवन में. लेफ्ट में जो हमारा साइंटिफिक, लॉजिकल, एनालिटिकल माइंड है वो एक्टिवेट होता है. राइट से हमारा जितना क्रिएटिव जो माइंड है वो एक्टिवेट होता है. और लाइफ इज द नेम ऑफ बैलेंस. कोई भी चीज बैलेंस ही हमको सक्सेसफुल बनाती है. एक सक्सेसफुल इंसान हर कुछ करता है. हम देखते हैं कि एक व्यक्ति 24 घंटे में 20 घंटे का इस्तेमाल कर लेता है, और एक व्यक्ति 24 घंटे में 15 घंटे सोता ही रह जाता है, वो इस्तेमाल नहीं कर सकता. लेकिन योग की क्रियाएं हमारी क्षमताओं को बढ़ाती हैं. तो इसको सही विधि से करना है. इसकी मुद्रा क्या होगी, एक बार आप मुद्रा देख लें. फर्स्ट 2 फिंगर्स, इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर, इसको आप थंब के नीचे ले आए, और बाद की 2 फिंगर स्मॉल फिंगर एंड रिंग फिंगर ये ऐसे होगी. ठीक है, इसको हम षण्मुखी मुद्रा भी कहते हैं. पुट योर, आपका अंगूठा राइट नॉस्ट्रिल में और ये दोनों इधर अपोजिट नॉस्ट्रिल में. तो इसको कैसे करना है, लेफ्ट से सांस भरें लंबा, 10 सेकेंड के लिए भरना है. अब इसको नाक को बंद करना है. राइट नॉस्ट्रिल, क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल. नाउ एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल. So from where you exhale, again inhale from the same nostril. So that's why this is called alternative, alternate nostril breathing, Nadi Shodhan or Anulom Vilom Pranayam. So what are the benefits? This improves your concentration, good for cardiac problem like हार्ट की किसी को प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है. तो अगर हम रोज में अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं तो हमारे इन सब सिस्टम्स में जितनी भी बीमारियां हैं उनसे हम दूर हो सकते हैं, उन बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं. नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट प्राणायाम. दिस इज कॉल्ड भ्रामरी प्राणायाम. इसी पोजीशन में बैठेंगे, सुखासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन में. दोनों अंगूठों से कान को बंद करना है. इंडेक्स फिंगर तर्जनी से आंखों को हल्का सा प्रेशर देके बंद करना है. मिडिल फिंगर से दोनों नॉस्ट्रिल के किनारे हल्का सा प्रेशर देके के बंद करना है, और स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर से माउथ के ऊपर रखना है. तो इसकी प्रॉपर पोजीशन होगी लाइक दिस. हल्का सा प्रेशर और विचारों के पॉजिटिविटी के साथ करना है. इसमें क्या करना है, इनहेल करें, पहले लंबा श्वास को भरें और हमिंग साउंड के साथ श्वासों को बाहर फेंकना है. जिनको रात में नींद नहीं आती, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, ऑफिस में बहुत ज्यादा एकदम काम हो जाए, इमीडिएटली आप इससे रिलैक्स हो सकते हैं. आप 4 to 5 टाइम्स कर लीजिए. सोने से पहले 10 से 11 बार करिए. अच्छी नींद आती है, साउंड स्लीप आती है, और इससे जो अल्फा वेव्स क्रिएट होती हैं ये हमारे ब्रेन सेल्स को रीजनरेट करती हैं. सो वी कुड स्लीप प्रॉपरली.
So Brahmari pranayam can be done anytime, and I recommend you to do before bed. When you go to sleep, before bed you can do 10 times, 11 times, whatever you can do. So this is good for your this mental peace, concentration, peace of mind, and tranquility. So there are a lot of benefits, especially for neurological disorder and sleep, insomnia problem. Okay, so this was a pranayam session, a small session. Now we move to our last kriya of today's common yoga protocol. This is योग निद्रा. 5 minutes का एक स्मॉल सेशन हम योग निद्रा का करेंगे. आप पीठ के बल लेट जाइए, लाई डाउन ऑन योर बैक. अगर चश्मा कोई लगाया है तो चश्मा उतार सकते हैं. यू विल फील मोर रिलैक्स्ड एंड यू कैन सी द इफेक्ट. ओके, दोनों पैरों के बीच में फासला 2 to 3 feet वी शेप बनाना है. हाथों को साइड में रखना है, वेस्ट से दूर, कमर से दूर, हथेलियों को आसमान की तरफ. यस, रिलैक्स पूरे शरीर. और पैर नहीं खुले किसी के, अभी पैरों को खोल लीजिए पूरी तरीके से. पूरी बॉडी को एकदम कॉन्शियसली मतलब कि आपका जो चेतना का स्तर है उससे जुड़ना है. आपके जो अष्ट चक्र हैं उनसे आपको अभी मैं जोड़ूंगी. आपका जो अंदर का ऊर्जा का स्तर है वो आपको महसूस करना है कि मेरे अंदर कितनी असीमित ऊर्जा है, क्षमता है, मैं कितना क्षमतावान हूँ या मैं कितनी क्षमतावान हूँ. तो हर व्यक्ति के अंदर वो सब कुछ है जो एक सफल व्यक्ति के अंदर होता है. तो इसका मतलब कि हमें उन चीजों को जगाना है, अपनी शक्तियों को जगाना है. तो नाउ वी विल डू योग निद्रा. इसमें हम शरीर के एक एक भाग को टॉप टू टोस से हम शुरू करेंगे और हेड तक जाएंगे, टॉप तक जाएंगे और एक एक अंग को हम रिलैक्स करेंगे. रिलैक्स का मतलब है कि हम मैसेज भेजेंगे अपने ब्रेन से. मैसेंजर जो हमारा होता है उससे हमारा मैसेज जाएगा कि मेरे पैर की एक एक उंगलियां हेल्दी हैं, उनमें प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है. एंड यू फील दैट व्हेन यू सेंड द मैसेज, you feel that instruction what you have given to that particular body part. Okay, so every finger is getting healthier, proper blood circulation is there, there is no stiffness, there is no pain, there is no ache. Now we come to the sole, ankle. Same ankle, एड़ियों को इसी तरीके से दोनों पैरों की एड़ियों को भी हमको स्वस्थ महसूस करना है. प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है. धीरे धीरे ऊपर हम आएंगे काफ मसल की तरफ. जो हमारे काफ मसल हैं ये स्वस्थ हैं, ये मजबूत हैं, इन पर हमारे शरीर का पूरा भार होता है, इसलिए इनका और ज्यादा मजबूत होना जरूरी है. ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा है, यहाँ की मेरी मांसपेशियां मजबूत हो रही हैं. हर एक इंस्ट्रक्शन को आप महसूस करिए कि मैं जो देखो, तुरंत आपको लगेगा कि जो आपने भेजा शरीर ने उसको स्वीकार कर लिया. आपने देखा कि वहां का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर है तो आप महसूस करेंगे कि यू आर फीलिंग एनर्जेटिक, यू आर फीलिंग हैप्पी. ये हमारा विचार ही है. हम जीवन में जो विचार करते हैं वो हम बन जाते हैं. बस विचारों में मजबूती होना चाहिए, विचारों में स्टेबिलिटी होना चाहिए. सो नाउ वी कम टू द नीज, we come to the thighs. Same instructions will be given to each of the body part. आपकी thighs मजबूत हो रही है, blood circulation proper है, healthy है. Now we come to the stomach, chest area, shoulder. Shoulder relax, relax, relax. Fingers को देखेंगे, hands की fingers को. फिंगर मूवमेंट बिल्कुल लाइट और बहुत हल्कापन है पूरे शरीर में. मेरा शरीर एकदम हवा, रुई के गोले की तरह बिल्कुल हल्का है. और ऐसा आप महसूस करेंगे कि आप कहीं सुरम्य जगह में आप विचरण कर रहे हैं, जहां पर सिर्फ प्रकृति है, जहां पर आप अपनी मूल प्रकृति के साथ, मदर नेचर के साथ आप अलाइन हो रहे हैं. आपकी बॉडी क्लॉक बायोलॉजिकल क्लॉक से मिंगल हो रही है. आपके शोल्डर, आपके एल्बो. नाउ वी कम टू द फेस एरिया, हेड एरिया. ईच बॉडी पार्ट ऑफ योर हेड एरिया, जस्ट विजुअलाइज
every body part is getting healthier. Proper blood circulation is there. My face is glowing. I'm one of the most beautiful lady, handsome boy of this planet. Always feel good. Always feel confident. Always feel happy. This is the ultimate thing what we can do for our body, our mind, our soul. And this is our duty also, to make it happy, healthy, and sustain. So every body part, now you have given instruction, you have sent the instructions to each body part, and now you can feel the effect. Any kind of pain is not there. You are relaxed, शांत, बिल्कुल शांत, किसी तरीके का कोई तनाव नहीं, किसी तरीके का कोई अवसाद नहीं, कोई नकारात्मकता नहीं। अपने आप को सबसे सफल व्यक्तियों में से देखिए, संतुष्ट व्यक्तियों में से देखिए कि भगवान ने मुझे कितना कुछ दिया है, मुझे उसका धन्यवाद करना है, मुझे हमेशा ग्रेटिट्यूड के साथ रहना है। क्योंकि जब हम ग्रेटिट्यूड के साथ नहीं रहते, उसी क्षण हमारे जीवन में दुख आने शुरू हो जाते हैं। सो ऑलवेज रिस्पेक्ट व्हाट यू हैव। आगे तो वो मिलता ही रहेगा। जब आप रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर देते हैं, ग्रेटिट्यूड में रहना शुरू कर देते हैं, तो आपकी झोली कभी खाली नहीं होती। क्योंकि हम ईश्वर संतान हैं, ईश्वर पुत्र हैं, ईश्वर पुत्रियां हैं, और जो हमारे माँ बाप होते हैं, ईश्वर है, वो अपने बच्चों को कभी खाली नहीं रखता। ये हमारा पुरुषार्थ होता है कि हम पुरुषार्थ करना भूल जाते हैं, हम अपना धर्म निभाना भूल जाते हैं। तो इसी संकल्प के साथ, जैसे हमने शरीर के एक एक अंग को ढीला किया, नाउ वी विल सेंड एनर्जी टू ईच ऑफ आवर बॉडी पार्ट। वी विल एनर्जाइज टोज टू टॉप, पैरों की उंगलियां, एंकल्स, काफ मसल, नीज, थाइज, वेस्ट, स्टमक, चेस्ट, शोल्डर, फेस, हेड एरिया, सबको एनर्जाइज करने के बाद दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, दोनों हथेलियों को ऊपर उठा के रगड़ना है, हथेलियों को गरम, बिल्कुल गर्माहट लानी है, दोनों हथेलियों को अच्छे से गर्म करना है और दोनों आंखों पर रखना है। राइट हैंड राइट आइज पर, लेफ्ट हैंड लेफ्ट आइज पर थोड़ी देर रखना है। 10 सेकंड रखिए और महसूस करिए इस गर्माहट को। ये सिर्फ गर्मी नहीं है, ये ऊर्जा है जो हमने भी अभी इकट्ठी की। हमारे अंदर की ऊर्जा हमारी हथेलियों में आई, एंड यू कैन सी द मैग्नेटिक इफेक्ट। और ये आंखों में जिनके चश्मा है, इसी तरह से हथेलियों को रोज रगड़ के सुबह शाम आप आंखों में रखेंगे तो यू विल फील वेरी रिलैक्स। एंड नाउ स्लोली टेक द लेफ्ट साइड, बाईं तरफ करवट लेंगे और धीरे धीरे उठकर बैठेंगे। कैसा लगा? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? अच्छा लगा? बस एक शब्द, मैंने इतना देर तक बोला एक शब्द। अच्छा 2 शब्द हो गए, 3 शब्दों की लाइन। बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ओके, सो नाउ वी विल मूव टू आवर लास्ट सेगमेंट, शांति पाठ। सिट इन ज्ञान मुद्रा। ये तो सभी को आता होगा, सब साथ में चैंट करेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। और इसके बाद हम लोग इसी के कंटिन्यूएशन में 5 बार लंबा ओम करेंगे, शांति पाठ के कंटिन्यूएशन में ही। आंखें बंद, बॉडी स्ट्रेट, इरेक्ट, आईज क्लोज, स्माइलिंग फेस। अभी आपका ऊर्जा का स्तर बिल्कुल सर्वोच्चतम स्तर पर है। उस ऊर्जा के साथ आपको शांति पाठ करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, एंड 5 times लॉन्ग ओम चैंटिंग। ओके, नाउ स्टार्ट। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्,
शान्तिः 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 Thank you so much for coming today. और आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सभी का योगदान है। आप सबको मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। इसके पहले हमारे बीच में गुरिंदर जी हैं। गुरिंदर जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप स्टेज में आकर खुन पार्वती को, आज इन्होंने बहुत अच्छा, जो पटिया से स्पेशली आई हैं हमारे लिए और यहाँ पर आप सबके लिए डेमोन्स्ट्रेशन किया। खुन पार्वती, कैन यू प्लीज कम टू हियर स्टेज, डाउन द स्टेज, and Miss Shrutkirti, you also come. कार्यक्रम यही समाप्त होता है और स्टेज खुला है। अगर किसी को कोई अपना अनुभव शेयर करना है, यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ अस। ऑफिशियली दिस प्रोग्राम एंड्स हियर। थैंक यू सो मच वंस अगेन। प्रणाम, नमस्ते। खाना यहाँ पर है, आप सभी को अपना भारतीय सात्विक भोजन है और वो लेकर ही सब लोग जाएंगे। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। और आज से एक संकल्प लेकर सब जा रहे हैं कि नहीं, योग करेंगे। कितने लोग करेंगे? अभी कुछ हाथ नीचे क्यों है? तो ये आज की ही उपलब्धि है कि हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का जो ये 8वां इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का जो एक कैंपेन प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इतनी मेहनत कर रही है ताकि हम सब स्वस्थ रहें, तो हमें इस प्रयास को व्यर्थ नहीं जाने देना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है।